Hello everyone, welcome back to my channel. Real Sumi Mata Peharu Sabaiलाई स्वागत छ. Today's video is all about my hair care routine. Alright, so today I am gonna show you how to dye your hair with henna. So henna is very good for your hair, guys. It gives you volume, it gives you shine, and it's a very good conditioner. So for this, guys, you just need Nipur Mehndi, which is 100% natural, and black tea and mixing bowl. So guys, you have to mix black tea and Nipur Mehndi, and you have to make thick paste. As you can see, it's very good for your hair, guys. Henna and black tea is also gives you a dark color. And I just love the color when wash your hair after applying this Nipur Mehndi. I just love my hair color. This is how I make, and for guys, you just have to leave for overnight. आप एयर टाइट करके overnight आप छोड़ रख लो अपना मेहंदी को. Guys, you can see Nipur Mehndi में आपको सभी everything is available in Nipur Mehndi. Everything is in it, जो कि आपका हेयर के लिए अच्छा है. ठीक है. So in the morning, before applying Nipur Mehndi or Mehndi, what I do, I just उस mixer में I just mix for 3 to 4 tablespoon lemon juice and 1 egg white. Egg white is very good for your hair, guys. It gives you shining, right? And lemon juice is very good for your scalp. आपके हेयर में यदि इन्फेक्टेड है तो दिस इज एंटीबैक्टीरिया है. नींबू आप लोग सभी को पता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर. यदि आपका हेयर में डैंड्रफ है तो इससे कम हो जाता है. ठीक है. और मैं यहाँ पर सरसों का तेल 3 to 4 ड्रॉप्स आई एम मिक्सिंग, बिकॉज हेना से आपका हेयर में बहुत ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है. तो थोड़ा सा हेयर ऑयल इसमें मिक्स करने से आपका मॉइस्चराइज हो जाता है. ठीक है. सो गाइस, यू कैन पुट एनी ऑफ योर हेयर ऑयल, लाइक नारियल का तेल भी बहुत अच्छा है, बट आई एम अप्लाइंग दिस सरसों का तेल. देखिए आपका ये फाइनल लुक ऐसा बना देना चाहिए. एंड सी हाउ आई एम अप्लाइंग हैना. अपना हेयर में अच्छी तरीके से यू जस्ट हैव टू पार्टीशन, अच्छा से पार्टीशन करके इसमें पहले आप हेना को स्काल्प में लगा लेना. ठीक है. See how I apply. And guys, this is front side of मेरा फ्रंट साइड है हेयर का. तो बैक साइड में भी आपको इसी तरीके से पार्टीशन करके हेयर का स्काल्प पे फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई. ऐसे इससे क्या होता है कि आपका हेयर में यदि मेरे डैंड्रफ सब है तो इससे अच्छा भी होता है. एंड इट्स वेरी गुड गाइस. यदि आप लोग रेगुलर यूज़ करते हो है ना, देन यू नो द डिफरेंस. एंड मैं तो मेरा फेवरेट है. आई डू अप्लाई वंस इन अ मंथ, सो इट्स माय फेवरेट है. इस तरीके से बैक साइड पे आप you have to apply. Alright, henna mehndi इसे पार्टीशन करके आप फाइनल लुक से ऐसा हो जाता है. देख सकते हैं आप फ्रंट साइड में. बैक साइड में भी आप इसी तरीके से लगाने के बाद में देखिए ऐसा आपको
बन बना रहा है। इस तरीके से आपको हेना मेहंदी को छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। And you just wash it with normal water with your favorite shampoo and the conditioner। देखिए गाइस, है ना, अप्लाई करने के बाद में मेरा हेयर में बहुत अच्छा शाइन आ गया है और इससे और भी ज़्यादा सिल्की हो गया है। ठीक है, so guys, hope you like my videos and please do subscribe to my channel and thank you for watching guys। I love you all, thank you all, bye bye, take care।